What's up, guys? Welcome back to Cranacat's Pro Max English course. आज हम पढ़ने वाले हैं A Roadside Stand, which is a poem that has been written by Robert Frost. So let's go on. Remember that, like everything that we have taught you so far in the poetry section, ये poem पोर्शंस में नहीं डिवाइडेड है. हम आपके बेनिफिट के लिए इन्हें पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, तो आपको पूरी पोम ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती है. पार्ट 1. The little old house was out with a little new shed. In front, at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts, at having the landscape marred with the artless paint. यहाँ पे pathetically का मतलब होता है in a way that arouses pity, especially by displaying sadness. तो आपने देखा होगा कि कभी एक डॉगी जिसको खाना खाना होता है वो पपी फेस बना लेता है. सो समथिंग लाइक दैट. डोल ऑफ ब्रेड मतलब अ टाइनी पोर्शन ऑफ ब्रेड. मार्ड का मतलब स्पॉइल्ड. These lines portray a scene of contrast between an old house, a new shed, and a roadside stand located by a busy road where traffic rushes by. तो यहाँ पे एक difference की बात हो रही है. All right. In these lines, Frost sets the scene with a description of an old house and a new shed situated near a fast-paced road. तो ये दो अलग-अलग चीजें हैं, एक नई shed और एक old house जो दोनों एक साथ एक फास्ट पेस रोड पे सिचुएटेड हैं. The use of juxtaposition between little old and little new emphasizes the difference in age and possibly condition between the two structures. जो पुरानी चीज़ है उसका कंडीशन हम सपोज कर सकते हैं कि खराब ही होगा, और जो नई चीज़ है हम अज्यूम करते हैं कि वो अच्छी नई होगी. Then the focus shifts to a roadside stand that is described as pathetically pled. The stand seems to be struggling and in dire need, मतलब great need of financial support. वो struggle कर रहा है, उसे पैसे चाहिए. The use of the phrase "not for a dole of bread" implies that it seeks more than just basic charity. तो उसे ज़्यादा पैसे चाहिए just in order to function again. Instead, it wants some of the money flowing through the city, which sustains its vitality and prevents it from fading away. Obviously, अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसके बेनिफिट में होगा कि जो सिटी में वो बिजनेस कर रहा है और जिस सिटी से उसके पास लोग आ रहे हैं, बिकॉज ये रोड साइड स्टैंड है, तो वहाँ पे अगर पैसा जाएगा तो इधर भी लोग आएंगे. लेकिन अगर सिटी में ही लोगों के पास पैसा हट जाए तो वो यहाँ पे स्पेंड क्यों करेंगे. In final lines में Frost describes the polished traffic passing by with a sense of purpose, almost oblivious to the surroundings. तो जो polished traffic मतलब बहुत हाई-फाई लोग आ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो oblivious हैं. They're not noticing what is around them when they pass by. If the drivers do take a moment to notice the roadside stand, they may feel a bit uncomfortable or out of sorts due to its modest and unrefined appearance. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा rich लोग हैं, privileged लोग हैं, इन्हें इतना unrefined सा जगह देखना, दे नॉट यूज टू इट, विच कंट्रास्ट विद द पॉलिश्ड एंड मॉडर्न वर्ल्ड अराउंड इट. तो यहाँ पे हमारा एक रोड साइड स्टैंड है जो इतना गया बीता है इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड अराउंड इट. इन समरी, Frost paints a poignant picture of disparity between the old, the new, and the struggling, using various poetic devices to convey the emotions and contrasts in the scene. यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज किए गए हैं? Juxtaposition, contrasting the little old house with a little new shed, highlighting their differences in age and condition. Transferred epithet, polished traffic, personification, a roadside stand that too pathetically pled. Part 2. Of signs that with the N turned wrong and the S turned wrong, offered for sale wild berries and wooden cots, or crook-necked golden squash with silver warts. A beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. Squash का मतलब होता है hair of fruit. Warts mean a small growth on the outer surface. Skin warts, आपको पता होगा क्या होते हैं वो. Crossly in an annoyed or angry way. Poetic devices इसमें यूज किए गए हैं. Irony. The irony lies in the speaker's observation that the signs are turned wrong and yet they express irritation at someone's unwillingness to spend money on these arguably subpar offerings. तो वो कह रहा है कि यार देखो ये साइन turned wrong है, ये हैं, और फिर वो acknowledge कर रहे हैं अपनी mistakes और फिर भी कह रहे हैं यार यहाँ पे पैसे क्यों नहीं कोई खर्चता. All right, let's go on. In this stanza, in this part by Robert Frost, the speaker describes various signs selling different products that are turned wrong with their directions misaligned. तो वो imperfect से हैं. N को गलत लिखा हुआ है, S को गलत लिखा हुआ है. The first lines introduce us to the signs that are improperly positioned, possibly indicating a lack of attention to detail or care. तो वो ज़्यादा effort नहीं डाल रहे अपने business में अगर उनके signs ही खराब हैं. These signs are advertising products for sale, such as wild berries and wooden cots and unusual looking squash with silver warts. Additionally, there's a mention of beauty rest in a mountain scene, suggesting some kind of relaxation or escape offered for purchase.
purchase. The speaker addresses someone who has the money to make a purchase but is unwilling to do so. तो पैसे तो बहुत हैं, but अगर ऐसा condition रखा होगा तो कौन खर्चेगा? The speaker perceives this reluctance as an act of meanness or stinginess, and the tone becomes slightly cross or irritated. The speaker concludes by stating that their main concern is not the potential harm to the landscape caused by the signs and commercial activities. कि ये हम sign बना रहे हैं wood से या इधर उधर लगा रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता. The focus seems to be on the person's unwillingness to spend their money rather than the impact on the environment. कि पैसे नहीं खर्चने. Also, the poem's tone shifts from the descriptive and slightly humorous, मतलब funny and descriptive in the first part, to cross and reproachful, मतलब एकदम ऐसे घृणा से कोई अगर बात कर रहा हो, highlighting the speaker's frustration with the person's unwillingness to make a purchase. कि भाई तू क्यों नहीं खरीद रहा मेरे business से? Number 3, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. यहाँ पे poetic devices है, metaphor. The trusting sorrow represents the unspoken emotions and the desires that the speaker carries within. Symbolism, city money means to hope for an improved life and access to opportunities. Obviously, city money क्योंकि ये city से दूर रहते हैं तो इधर कम economic progress है, city में बहुत ज़्यादा पैसा है, people earn more money. Irony, there's a touch of irony in the desire for the life of the moving pictures promise, which suggests that speaker believes that movies offer a better life than reality and the current ruling party is allegedly withholding it. कि एक ऐसी दुनिया है जो हमारा current ruling party हमें दे नहीं रहा है. In this part by Robert Frost, the speaker, the poet, reflects on the unspoken sadness and longing that lies beneath their world. So, in city dwellers और in रोड साइड dwellers की लाइफ में कितना फर्क है. They described their roadside stand located far from the city where they ask for some money from urban dwellers जो city में रहते हैं. The purpose of this money is to test if it can improve their lives and fulfill the promises portrayed in movies which they believe the current ruling party is withholding from them. तो उनके अंदर एक ऐसा डिज़ायर है कि जो हम मूवीज़ में देखते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में मैनहट्टन रहने वाले लोग हैं, लॉस एंजलिस में रहने वाले लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो हम ऐसे जी सकते हैं. बट हमारी जो करंट पार्टी है वो हमारे डेवलपमेंट में फोकस नहीं कर रही और वो हमसे ये छुपा रही है, हटा रही है. This part encapsulates a sense of longing and hope. They hope कि हम सिटी जैसे रह पाएंगे. As the speaker seeks a better life and is willing to test the possibilities that money might bring. The reference to the moving pictures promise reflects a desire for the idyllic and glamorous life depicted in films, contrasting with their current humble existence at the roadside stand. तो यहाँ पे हमें पता चलता है that they are trying to escape from the reality by the sense of movies. The stanza touches on themes of aspiration, inequality and the allure of an idealized life portrayed in the media. आजकल की सोशल मीडिया वाली दुनिया में हम लोगों को देखते हैं उनके जिम के फिजिक्स इतने बढ़िया हैं लेकिन हमें उनकी रियलिटी नहीं पता. क्या पता फोटोशॉप हो, क्या पता वो गेयर पे हो, हमें नहीं पता. बट हम ऑलवेज वी डिजायर फॉर समथिंग बेटर एंड वी वंडर व्हाई अदर पीपल हैव इट बेटर देन अस. 4. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages, next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. Kin का मतलब होता है one's family and relations, relatives. Beneficent का मतलब generous or doing good. Beasts of prey, an animal killing another animal like a टाइगर जो डियर को मारता हो. आउट ऑफ देयर मिड्स मतलब देयर परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड और टेरिफाइड, अफ्रेड स्टेट. Poetic devices. Irony. The speaker uses irony when they refer to greedy good doers and beneficent beasts of prey. Beneficent beast is also an alliteration. These phrases are contradictory and suggest a sense of skepticism, मतलब doubt towards those that are trying to help. Alliteration and oxymoron. Beneficent beasts and greedy good doers. Alliteration तो है, but oxymoron भी है. अगर कोई beast है, तो वो beneficent कैसे हो सकता है, और अगर कोई good doer है, तो वो greedy कैसे हो सकता है. This portrays a scenario where individuals who are considered unfortunate are being relocated to villages according to news reports. कि ये लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है तो हम इन्हें विलेजेस भेज देंगे, सिटी में भाई तू क्यों रह रहा है, तेरे पास पैसे भी नहीं है रहने के. These people will have access to amenities such as a movie theater and a grocery store near their new homes, which is intended to make their lives easier and eliminate their worries about the future. तो वो कह रहे हैं कि भाई पैसे नहीं है, कोई नहीं, तेरे विलेज के पास हम मूवी थिएटर, ग्रोसरी स्टोर बना देंगे, you won't have to worry about basic entertainment or basic food.
However, the poet is critical of this plan. He doesn't agree with it and uses the phrases greedy good doers and beneficent beasts to describe those implementing it. These labels are used metaphorically to highlight the contrast between their claimed intentions and their actual motives. वो क्या बोल रहे हैं और वो क्या असली में करना चाहते हैं. Such individuals, including wealthy people and politicians, pretend to assist the shed owners but are in fact selfish and manipulative. तो वो कहते हैं कि जिनके पास पावर है, पैसा है, वो हमारे जैसे शेड ओनिंग लोग जो रोड साइड में रहते हैं, स्टैंड लगाते हैं सिटी के बाहर, उन्हें सपोर्ट करने का बड़ा एक्ट करते हैं. बट इन रियलिटी ये हमें रीलोकेट हमारे लिए नहीं कर रहे. दे आर रीलोकेटिंग सो दैट दे कैन बूम देयर ओन बिजनेस एंड आइडेंटिटीज इन द सिटी. These individuals trap the less fortunate in the schemes, making it challenging for them to make independent decisions. Now वो ऐसे ही relocate कर रहे हैं. उन्होंने उनसे पूछा कि तुम वापस जाना चाहते हो villages में? नहीं, ऐसे ही कर दिया. The benefits they provide are designed to confuse and control rather than truly help or aid. While telling the poor to relax, they themselves remain indolent throughout the day. Furthermore, they disrupt the poor people's sleep patterns, perpetuating a harmful cycle. उनकी sleep disturb कर देते हैं. In essence, the poem reveals the hypocrisy of those who feign assistance, जो कहते हैं कि हम तुम्हें help करेंगे, लेकिन help नहीं करते. वो अपनी power को exploit करते हैं to dominate and control the lives of the vulnerable for their personal gain. The contrast between the pitiful people's traditional way of life and the new plan that's being imposed of them is worthy of being noted. तो उनके sleep patterns तुम निकाल के उन्हें city life के patterns तुम दे रहे हो, उनके घरों से निकाल के उन्हें तुम villages में भेज रहे हो. You're not helping them. उन्हें help क्या करेगा? Economic activity, कि उनके road side stands पे, उनके sheds पे लोग आएं, उनसे खरीदें, उनसे बात करें, है ना? पर वो ये लोग नहीं करते. 5. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop but only to plow up grass, and using the yard to back and turn around. In vain का मतलब without success or a result. तो अगर आपने ग्रैंड अकेड का इंग्लिश कोर्स नहीं होता तो योर इंग्लिश एफर्ट्स वुड हैव बीन इन वेन. लर्क, बी और रिमेन हिडन सो एज टू वेट इन एम्बुश फॉर समवन और समथिंग. मतलब बेसिकली आप लर्क कर रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो. प्लो मीन्स टू मूव इन अ फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड मैनर. पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे सिंबलिज्म. द पासिंग कार्स एंड द स्टॉपिंग कार्स सिंबलाइज द पोटेंशियल फॉर इंटरैक्शन एंड कनेक्शन एंड ऑल्सो फॉर कमर्शियल एक्टिविटी, वाइल द प्लोइंग अप ऑफ ग्रास सिंबलाइज अ डिसरप्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट. ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है इन सेल्फिश कार्स. इन दिस पोर्शन द पोएट addresses the theme of unfulfilled desires. उनके पास गाड़ियां रुकती हैं लेकिन बात करके चली जाती हैं. The shed owners innocent and childlike longing for customers कि हमारे पास आएं is depicted as futile. It is useless. उनके longing से customer नहीं आ रहा है. The poet feels empathetic towards their sadness as they gate out of their shed windows, yearning, looking for a car to stop and make a purchase. This longing is compared to a prayer, a heartfelt wish for a buyer to come their way. So they're almost praying कि भगवान दे दो हमें कोई customer. लेकिन oftentimes prayers are not heard. And just like this, their longing is also not met with success. The shed owners spend their entire day waiting, hopeful that a car might hit the brakes and stop near the stand. Amidst countless passing cars, the poem suggests that perhaps one might stop to inquire about the prices of the goods they offer. तो वो ऐसे ही आके they pretend to be interested. उन्हें कुछ ऐसा लगेगा, but they're not interested. बस टाइम पास कर रहे हैं, वो खरीदने नहीं वाले इनसे. This portrays the contrast between the owner's hopeful anticipation and the reality of their situation. While a car does stop at the stand, finally कोई कार रुकती है, the outcome is disappointing. Rather than making a purchase, the car disturbs the grass by using the yard to turn around. उनकी ग्रास ही तो उनकी ब्यूटी है. तो भाई उस पे ही चला के ऐसे नीडलेसली उनका सारा ब्यूटी खत्म कर रहा है. अब और लोग नहीं आएंगे, रुकेंगे ही नहीं, वो खरीदेंगे ही नहीं. तो एक साइकिल बन जाता है. दिस इंसिडेंट exemplifies the disparity between the owners yearning for meaningful business and the letdown that they often face. In essence, the poem captures the sense of longing, disappointment and the incongruity. ये दो चीजें सीख नहीं बैठती between the owner's hopes and their actual experiences. It underscores the bittersweet nature of their aspiration in the context of a roadside stand. 6. And another to ask the way to where it was bound. And another to ask could they sell it a ton of gas, a gallon of gas. They couldn't this crossly, they had none, didn't it see? No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. Requisite का मतलब होता है required or needed. Sane का मतलब होता है sensible or realistic. In this part of the poem, the poet explores the interactions at a roadside stand. Different cars stop for various reasons. कब कहीं पूछती हैं कि हमें directions दे दो, others बोलते हैं क्या तुम्हारे पास पेट्रोल है.
Poet becomes frustrated, questioning whether these drivers comprehend that the stands operators can't afford to sell fuel. भाई बहुत महंगा है, दुबई के शेख नहीं है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं. They're simple village dwellers, man. The poet underscores that the kind of work the villagers do and the items they sell can't bring about the desired improvement. अब अगर तुम यहाँ पे आलू बेचने लग जाओ तो तुम बिलियनियर तो बन नहीं सकते. बिलियनियर तो तुम ऑयल बेच के ही बनोगे. द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम प्रिवेंट अ सिग्निफिकेंट अपलिफ्टमेंट. ठीक है यार, अगर तुम्हारा रोड साइड स्टैंड चल भी गया तो तुम 1,000 रुपये महीने के 10,000 कमा लोगे, 20,000 कमा लोगे. उससे तुम्हारी फैमिली ऑफ 10 तो नहीं चल पाएगी. दिस सिचुएशन नेसेसिटेट्स अ मोर इंपैक्टफुल सोल्यूशन. इट मेक्स इट नेसेसरी वन दैट कुड प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द डिफिकल्टीज. तो यहाँ पे पोइट क्वेश्चन कर रहा है कि भाई इन्हें एक इंपैक्टफुल सोल्यूशन चाहिए जो गवर्नमेंट ही दे सकती है. लेकिन तुम लोग तो रिच को फेवर करते हो, सिटी डेवलपर्स को फेवर करते हो. तुम्हारी रूलिंग पार्टी जो है क्या काम की है. द फॉलोइंग डे द पोएट मेक्स अ मोर pragmatic approach, more practical approach. They consider the possibility of affluent individuals visiting the stand, जिनके पास पैसा होता है, and offering a comprehensive solution, potentially through death. This drastic idea highlights the village's profound challenges and the poet's contemplation of a transformative remedy. तो देखो यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं. आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन. ये रेपिटेशन हमें बताती है दैट नाउ दे आर डेस्परेट फॉर डेथ बिकॉज लिविंग लाइक दिस इट्स ऑलमोस्ट डेथ. भाई अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है टू सपोर्ट योर लाइफ तो डेथ ही ठीक है. दैट्स वाई दे आर प्लीडिंग फॉर डेथ कि भाई तुम रुको मत, हमें डेथ ही दे दो ऐसे. इन एसेंस द पोम डेल्व्स इनटू द स्ट्रगल्स ऑफ दोज एट द रोड साइड स्टैंड, जो विलेजेस के अराउंड होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, एम्फोसाइजिंग द रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज, जिनके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो बिजनेस चला पाएँ. और ऐसे लोग जो आके रुक के इनसे फ़ायदा उठा लेते हैं, ऐसे पॉलिसी मेकर्स, ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे पॉलिटिशियंस जो इनको एक्सप्लॉइट ही करते रहते हैं. एंड द पोटेंशियल फॉर अ ड्रास्टिक सोल्यूशन टू एलिविएट देयर हार्डशिप्स. Thank you. My message with this is to support local business. You know, instead of buying shoes, no, not shoes. I mean, instead of like opting for Swiggy and all every time you want to eat something, business दो यार जो सामने तुम्हारे यहाँ पे बैठ के भुट्टे बेच रहा है या फिर शकरकंदी बेच रहा है. हेल्प करो इन लोगों को because they need your money. And the world operates. We're living in a circular economy. One person produces and consumes at the same time, right? All right. Till next time, keep winning, you champions.